हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जनरल एनाटॉमी का सेकंड चैप्टर जो कि है स्केलेटल सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं। स्केलेटल सिस्टम। सो व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम? द स्केलेटल सिस्टम फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. इट फॉर्म्स structural framework of the body. Okay. And it is primarily meant for production of movement with the help of muscle, and it is primarily meant for production of movement with the help of muscle attachment. Okay. So स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, मतलब ये एक शरीर का ढांचा तैयार करता है, एंड इट इज प्राइमरली मेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल अटैचमेंट. द नेक्स्ट इज the skeletal system is made up of two components. It is made up of two components. One is called bone and the next is called cartilage. Okay. अब देखते हैं बोन क्या होता है एंड व्हाट इज कार्टिलेज. सो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम इज बोन. Bone, it is a specialized connective tissue which is impregnated with inorganic salt. It is special connective tissue which is impregnated with inorganic सॉल्ट. इसका मतलब यह है कि जो बोन होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है. वन इज कनेक्टिव टिश्यू एंड द सेकेंड इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट. ओके. अब समझते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है. व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? So connective tissue is a tissue which connects, bind and provides support of the other tissue of the body and organ. अगर जनरल कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, तो ईच कनेक्टिव टिश्यू consists of three structure. One is called cell, second is called fiber, and third is called ground substance. General connective tissue contains cell, mainly fibroblast, then macrophages, then mast cell, then plasma cell, then reticular cell. These are the cell which is present in the normal connective tissue और general connective tissue. अगर फाइबर्स की बात करें तो जनरल कनेक्टिव टिश्यू में तीन टाइप के फाइबर्स होते हैं, थ्री टाइप्स के फाइबर्स होते हैं. वन इज कॉल्ड कोलेजन फाइबर्स, सेकेंड इज इलास्टिक फाइबर, एंड थर्ड इज कॉल्ड रेटिकुलर फाइबर. These are the three fibers which is present in the general connective tissue. Now the question is why bone is included in the special connective tissue. ठीक है, बोन स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्यों होता है? क्योंकि अगर नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, रेटिकुलर सेल, ये सारी सेल प्रेजेंट होती है. बट इन केस ऑफ बोन
There is a special cell which is present in bone, and the name of this cell is osteoblast. Osteoblast. And one more thing, the normal function of connective tissue is provide support, okay? But in case of bone, it provides support as well as it store minerals. Minerals like calcium and phosphorus. That's why the bone is called special connective tissue. The other example of special connective tissue is cartilage, and blood, क्यों cartilage और blood भी special connective tissue होता है? Because cartilage also contain a special type of cell which is known as chondrocytes, and blood also contains special types of cell which is known as RBC, blood, WBC and platelets. These two structures also provide support to our body, but the one additional function of blood is to exchange of nutrition. Okay, that's why this structure is included in a special connective tissue. Now the inorganic salt mainly contains calcium salt. Okay. And calcium salt may be calcium phosphate, some amount of calcium carbonate, and some other salts. Now the next point is function of bone. Now the first function of bone is protection. कैसे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? जो हमारे बॉडी में स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, thoracic cage है, these structure protect vital organs like skull protect brain, vertebral column protect spinal cord, and thoracic cage protect lungs, heart, and other viscera. Okay. Now the second function of bone is storage. क्या स्टोर करता है ये? It store approximate 97% of the total body calcium and phosphorus. Means it store 97% of the body calcium and phosphorus. Okay. Now the next function of bone is production. क्या प्रोड्यूस करता है? The bone contains bone marrow which produce RBC. Bone marrow produce RBC. Now the next function is movement. The bone provide surface area for the muscle attachment, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में मूवमेंट होती है. Means provide surface area for muscle attachment. This function is the bone provide shape and support to the body. Okay, it's all about function of the bone. Okay, now the next point is division of skeletal system. Division of skeletal system.
The skeletal system is divided into two parts. One is axial skeleton, and second is appendicular skeleton. Appendicular skeleton. Okay. Now, the axial skeleton include skull, vertebral column, and thoracic case. Thoracic case. While the appendicular skeleton include pectoral girdle, pelvic girdle, upper limb bone, upper limb, and lower limb. So the axial skeleton include, the first is skull. Okay, the skull consists of cranium bone, facial bone, ear ossicles, and hyoid bone. Okay, the skull consists of cranium bone, facial bone, ear ossicle, and hyoid bone. The cranium bone number is 8, facial bone is 14 in number, ear ossicle 3 plus 3 is equal to 6, means 3 ear ossicles on each ear, and hyoid bone is 1 in number. Okay, now what is the name of the cranium bone? These are, it is also known as calvaria, or skull cap. Okay, the name of the cranium bone is, first is frontal bone, second is parietal bone, third is occipital bone, fourth is temporal bone, fifth is sphenoid bone, and sixth is ethmoid bone. अगर इसके नंबर की बात करें तो फ्रंटल बोन इज 1 in number, parietal 2 in number, occipital 1 in number, temporal bone is 2 in number, sphenoid 1 is number, and ethmoid is 1 in number. काउंटिंग करेंगे तो टोटल 8 in number. तो these are the name of the cranium bone. ओके, ये जो सामने की, दिस इज कॉल्ड स्कल कैप और क्रेनियम और कैलवेरिया. ये जो सामने की तरफ बोन होती है इसे हम कहते हैं फ्रंटल बोन. ओके, ये जो पीछे की तरफ होती है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल बोन. ये जो बीच में होती है दो, दिस कॉल्ड पैराइटल बोन. हाउ टू रिमेंबर? पैराइटल मतलब परी और एंजल. जो एंजल क्राउन होता है वो यहाँ पे रखा जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैराइटल बोन. फोर्थ इज टेम्पोरल बोन. टेम्पोरल, हाउ टू रिमेंबर? टेम्पल से याद रखेंगे, जब हम किसी मंदिर को देखते हैं, जाते हैं तो कुछ सब लाइक ऐसे करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल बोन. यहाँ पे जो होती है टेम्पोरल बोन. एंड वन इज स्फिनॉइड, इट इज अ बटरफ्लाई शेप बोन which lie inside the calvaria, and last is ethmoid bone. So this is the name of the cranium bone. Now the facial bone, कौन कौन सी facial bone होती है उसके नाम पहले देखते हैं. तो फर्स्ट इज zygomatic bone.
Second is maxilla, also known as upper jaw, Next is palatine bone, Then nasal bone, Then lacrimal bone, Then inferior nasal concha, then vomer, then mandible, also known as lower jaw. Okay, so these are the name. These are the name of the facial bone. First is zygomatic bone. Okay, also known as cheekbone, which is 2 in number. Maxilla, 2 in number. Palatine bone, 2 in number. Nasal bone, 2 in number. Lacrimal bone, 2 in number. Inferior nasal concha, 2 in number. Vomer, 1 in number. And mandible is 1 in number. अगर इसको काउंट करेंगे तो टोटल कितनी आएगी? टोटल 14 बोन. ओके, अब ये देख लेते हैं कौन कौन सी बोन है. तो ये वाली जो बोन होती है इसे कहते हैं जाइगोमेटिक बोन और चिक बोन. देन नेक्स्ट इसके दिस इज द मैक्सिला और अपर जॉ. देन पैलेटाइन बोन इनसाइड द माउथ जो हार्ड पैलेट बनाता है, दिस कॉल्ड पैलेटाइन बोन. नेजल बोन, ये दिस इज द नेजल बोन जहां पे ये मेरा चश्मा टिका हुआ है, दिस इज कॉल्ड नेजल बोन. Inside the orbit, inside the medial wall of the orbit, there is a lacrimal bone. Then inferior nasal concha inside the nose. Then vomer, and last mandible or lower jaw. This is the mandible or lower jaw. Now the next is ear ossicle. The name of the ear ossicle is malleus, incus, and stapes. It is also known as miss bone, M-I-S, miss bone. Okay, malleus, incus, and stapes. Now the next is hyoid bone. इसका शेप कैसा होता है? हॉर्सशू शेप होता है. It is present in the neck region, and it is the bone which does not articulate with any other bone. मतलब ये जो bone होती है वो किसी से articulate नहीं होती और ना ही कोई joint बनाती है. And this bone provide attachment of the muscle of the neck region. Now the next is vertebral column. Okay, now the total number of vertebra is 26 in case of adult. Okay, but in case of newborn baby it is 33 in number. In newborn baby. Okay, and these 26 vertebra is divided into 5 parts. Okay, now the 1 to 7 is known as cervical vertebra. Okay, 8 to 19 is called thoracic vertebra. Then 20 to 24 is called lumbar vertebra. Okay, 25 is known as sacrum, and 26 is known as coccyx. तो सर्वाइकल वर्टेब्री कितनी होती है? टोटल 7 होती है. थोरेसिक वर्टेब्री टोटल 12 होती है. लंबर वर्टेब्री 5 होती है. सैक्रम 1 होता है और कॉक्सिक्स 1 होता है. बट इन केस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी द नंबर ऑफ सैक्रम वर्टेब्रा इज 5 and number of coccyx vertebra is 4. So total in case of newborn
is 33, but in case of adult it is 26. Okay, and the one more thing, the first cervical vertebrae is known as atlas, and the second cervical vertebrae is known as axis. Okay, why we called first cervical vertebra is atlas? बिकॉज आपने देखा होगा जो किसी मूवी में जब मूवी शुरू होती है तो एक ह्यूमन होता है और वो पृथ्वी लेके अपने कंधे पे लेके खड़ा होता है. सिमिलरली जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है जिसको हम एटलस कहते हैं, दिस एटलस वर्टिब्री होल्ड आवर होल हेड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एटलस. एंड द सेकंड इज कॉल्ड एक्सिस. क्यों? क्योंकि जो एक्सिस वर्टिब्रा होता है इस पे एक प्रोसेस होता है, बोनी प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं ओडेंटॉइड प्रोसेस. इसी प्रोसेस या इसी एक्सिस के अराउंड हमारी जो एटलस होती है वो मूव करती है. ओके, मतलब जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है वो एक्सिस का काम करती है, जिसकी वजह से हम ये वाले एक्शन कर पाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सिस वर्टिब्रा. नाउ द थर्ड इज thoracic case. Thoracic case. It consists of two structure. One is called ribs and second is sternum. Ribs कितनी होती है? टोटल 24 होती है, मतलब 12 पेयर होती है, टोटल 12 पेयर. स्टर्नम कितनी होती है? दैट इज सिंगल, यानी 1 इन नंबर होती है. ये जो रिब्स होती है 12 पेयर, जो फर्स्ट टू 7 रिब होती है, फर्स्ट टू 7 रिब्स, द फर्स्ट टू 7 रिब्स एंटीरियरली, मतलब आगे की तरफ, इट आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम. जो बीच में बोन होती है दिस इज कॉल्ड स्टर्नम. फर्स्ट टू 7 रिब anteriorly articulate with sternum and posteriorly it articulate with thoracic vertebrae. Okay, now 8, 9 and 10, जो 8, 9 और 10 रिब्स होती है, anteriorly it articulate with costal cartilage of 7th rib and posteriorly it articulate with thoracic vertebra. and 11 and 12th rib जो होती है, 12th rib, anteriorly it is free and posteriorly it is articulated with thoracic vertebra. That's why it is called floating ribs. Floating ribs. Okay. Now the next is appendicular skeleton. Appendicular skeleton. The appendicular skeleton include pectoral girdle and upper limb bone and upper limb bone and pelvic girdle and lower limb bone. Pectoral girdle is 4 in number and upper limb bone is 30 on one side into 2, total 60 in both side. Pelvic girdle is 2 in number and lower limb bone is 30 into 2, total 60 in number. अब देखते हैं पेक्टोरल गर्डल में कौन सी बोन आती है एंड अपर लिम्ब में कौन सी बोन आती है एंड पेल्विक गर्डल में कौन सी बोन है और लोअर लिम्ब में कौन सी बोन है. सो पेल्विक गर्डल इज कंसिस्ट ऑफ 2 बोन. वन इज कॉल्ड clavicle and second is called scapula. Clavicle also known as collar bone, यहाँ पे जो होती है this is called clavicle, also known as collar bone और beauty bone. एंड स्कैपुला जो पीछे की तरफ होती है, यहाँ पे जो होती है, इसे इट इज ऑल्सो नोन एज शोल्डर ब्लेड. शोल्डर ब्लेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बोन होती है एकदम फ्लैट होती है, ब्लेड की तरह होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शोल्डर ब्लेड. क्लैविकल, वो जो ये जो क्लैविकल नाम आता है
क्लेविकल का मतलब होता है की। अगर आप क्लेविकल को देखेंगे तो एक बड़ी की तरह होती है, इसलिए इसका नाम क्लेविकल पड़ा है। नाउ द नेम ऑफ द अपर लिम्ब बोन, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल बोन, कार्पल, मेटाकार्पल and phalanges. Humerus 1 plus 1 2, radius 1 plus 1 2, ulna 1 plus 1 2, carpal bone 8 plus 8 is equal to 16, metacarpal 5 plus 5 10, phalanges 14 plus 14 total 28. Okay, so these are the अपर लिम्ब बोन। फर्स्ट इज ह्यूमरस, यहाँ पे जो आर्म की जो बोन होती है यहाँ इसे बोलते हैं ह्यूमरस। फोर आर्म की बोन को हम कहते हैं रेडियस और अल्ना। जो रेडियस होती है वो लेटरल बोन होती है और जो अल्ना होती है वो मिडल बोन होती है। नेक्स्ट इज अ कार्पल, जो रिस्ट पे जो बोन्स होती है उसको हम कार्पल बोन कहते हैं। 8 होती है, चार चार के लेयर में होती है, 4 ऊपर होती है और 4 नीचे होती है। 1 प्रॉक्सिमल रो एंड सेकंड इज डिस्टल रो। टोटल 8 होती है। मेटाकार्पल, दिस इज यहाँ पे जो बोन्स होती है उसको हम मेटाकार्पल कहते हैं। 5 होती है, 5 plus 5 टोटल 10। एंड phalanges, दिस इज द phalanges, इसे डिजिट्स भी कहते हैं। जब हम डिजिट्स की काउंटिंग करते हैं तो थंब से स्टार्ट करते हैं। तो थंब में देयर आर 2 डिजिटल बोन, 3 in a index finger, 3 in a middle finger, 3 in a ring finger and 3 in a little finger, total and 14 होती है। एंड इसका एक phalangeal फॉर्मूला होता है जो होता है 2 3 3 3 3। ओके, दिस इज कॉल्ड phalangeal formula. So this is the bone of upper limb. Now the next is pelvic girdle. Pelvic girdle is include hip bone. Hip bone. Total 2 in number. Okay. Now the name of the lower limb bone is, first is femur. Femur. Second is tibia. Next is fibula. देन यहाँ पे कार्पल बोन थी, यहाँ पे टार्सल बोन होती है। टार्सल बोन, टार्सल बोन। नेक्स्ट इज मेटाटार्सल एंड लास्ट इज phalanges. Phalanges. Okay, femur 1 plus 1 2, tibia 1 plus 1 2, fibula 1 plus 1 2, टार्सल बोन 7 होती है, मीन्स 7 plus 7 is equal to 14. Metatarsal is 5 plus 5 10 and phalanges is 14 plus 14 is equal to 28. Now the same is जो phalangeal formula यहाँ पे था अपर लिम्ब में, सेम phalangeal formula यहाँ पे भी होगा 2 3 3 3 3. This is the phalangeal formula of lower limb. इन केस ऑफ लोअर लिम्ब जो हम डिजिट्स की काउंटिंग करते हैं वो ग्रेट टो टू लिटिल टो करते हैं, बट इन केस ऑफ अपर लिम्ब जो हम फिंगर की काउंटिंग करेंगे वो थंब टू लिटिल फिंगर करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एपेंडिकुलर स्केलेटन।